Good morning, class. Today we'll be discussing a case study. Okay. So, in your paper supply chain analytics, you will be getting the first question as a compulsory question, which will be of 20 marks. So, here we'll be discussing the same. We'll be discussing one case study. Okay. So, let's get started. See the case. The case is, suppose you hold the position of a supply chain manager in a multinational retail corporation that operates in various countries. Then lately the company has encountered difficulties in efficiently managing its supply chain, leading to higher expenses and customer discontent. So now, as part of your responsibility, you are assigned with the implementation of the data-driven solution to enhance the efficiency of the supply chain. So you need to create a detailed plan that integrates descriptive, predictive, prescriptive analytics method to tackle the supply chain challenges encountered by the company. So you have to illustrate the application of each analytics techniques at various stages of the supply chain, that is plan, source, make, deliver, return. At every stage you have to describe how descriptive, predictive and prescriptive analytics can help. With the concrete, you have to take some example. Explain the possible advantage and difficulties of incorporating these analytical solutions. So this is a case study that you are a supply chain manager and you in a multinational company, and the company is now facing difficulty in managing its supply chain because of the higher expenses and customer discontent. Okay, so you have to use the data driven solutions and you have to give a detailed plan on how descriptive, predictive and prescriptive analytics can be used in all the processes, right from the plan, source, make, deliver, return. At every stage you have to create a hypothetical example. So here in the PPT I have also provided you with the solution. Let's discuss that, how you are supposed to deal with the question and how you are supposed to write in the exam. Okay, so you have to start. First, you have to give a introduction paragraph. We have to discuss on that in order to optimize the supply chain effectively, it is essential to use this analytical technique at all the stages. So the comprehension plan is here, which will be incorporating descriptive, predictive, prescriptive analytics to address the supply chain issues faced by that particular multinational real corporations. Okay, you need to give a small paragraph. Okay, then you have to start with the very first, that is plan. कि plan में आप descriptive analytics, predictive और prescriptive कैसे लगाओगे, ठीक है? तो you have to start with the descriptive कि it will be used in inventory analysis. So we have already discussed so many times that in descriptive what we do, we collect the historical sales data to understand the inventory level, the turnover rates, the stockouts. The historical data is collected. Then the dashboard can display key metrics such as you can get the analysis as average inventory level, days of supply, inventory accuracy. ये सब कैसे मिल जाएगा? Historical data से मिल जाएगा, जो कि आपको descriptive analytics से मिल जाएगा, right? फिर डिस्क्रिप्टिव से एक और काम आप कर सकते हो. पहला हो गया आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दूसरा हो गया डिमांड एनालिसिस. मींस यू कैन एनालाइज द हिस्टोरिकल डेटा सेल्स टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, द सीजनैलिटी एंड डिमांड पैटर्न. दिस कैन बी डन. Then by using predictive analytics, you can forecast the demand, right? So by utilizing the machine learning algorithm, you can forecast the demand based on the descriptive analytics data that you have collected. Okay, then you can use prescriptive analytics and it can be used in inventory optimization. That means you can implement the optimization models to determine the optimal inventory kya hona chahiye. That can be determined with the help of prescriptive to minimize the holding cost. Okay, then with the prescriptive you can do scenario planning. Means you can use simulation methods to evaluate the impact of various scenarios, okay, on the demand supply chain. Then you also in the question it was required to give the possible advantage and difficulties in incorporating. तो अगर आप ये कर रहे हो प्लान के स्टेज पर, अगर आप डिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव लगा रहे हो तो आपको बेनिफिट क्या होगा? इट विल इंप्रूव द एक्यूरेसी इन डिमांड फोरकास्टिंग, also reduce the stock out and also optimize the inventory level. However, the challenge will be, the data integration. हर जगह से data collect करना is the major challenge. Model accuracy and the need for skilled person and skilled analytics is another challenge. Okay, so this way you have described the
Plan. Okay, so plan is done. Now you have to focus on source. Okay, so let's see source. So in source, descriptive can be used in identifying or tracking the supplier performance analytics. So track and analyze the key performance indicators of suppliers such as the lead time, the defect rates and on delivery rate. तो आप सप्लायर को आइडेंटिफाई या सप्लायर का परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव यूज करो. फिर सप्लायर के रिस्क असेसमेंट को जानने के लिए यू कैन जस्ट यूज प्रिडिक्टिव मॉडल टू assess the risk of supplier failures based on historical performance data, financial health and geopolitical factors. Okay, सिमिलरली आप प्रिस्क्रिप्टिव लगाओगे और सप्लायर को सेलेक्ट करोगे ऑप्टिमाइजेशन के बेसिस पे. ओके, सो यू कैन अप्लाई ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स टू सेलेक्ट द बेस्ट सप्लायर बेस्ड ऑन द मल्टीपल क्राइटेरिया. उनका कॉस्ट क्या है, क्वालिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, एंड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसीज. इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट होगा यू विल गेट द इनहेंस सप्लायर परफॉर्मेंस, रिड्यूस सप्लाई रिस्क एंड कॉस्ट सेविंग. However, the challenge will be the data quality and consistency is the major challenge. ठीक है, रिलायंस ऑन एक्सटर्नल डेटा. आपको क्योंकि बाहर से सप्लायर्स का डेटा जो लाना है, बाहर से लाना है, तभी तो आप उसका ये परफॉर्मेंस देख सकते हो ना. तो दिस मे बी एन इश्यू. सो दिस वे यू हैव डेल्ट विद सोर्स एज वेल. नेक्स्ट इज प्लान. सो प्लान में आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्टिव कैसे यूज करोगे, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए. सो यू कैन एनालाइज प्रोडक्शन डेटा टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस मेट्रिक्स सच एज प्रोडक्शन यील्ड, मशीन यूटिलाइजेशन एंड डाउन टाइम. All these can be tracked with the descriptive analytics. Predictive से क्या करोगे, you can implement predictive analytics to maintain the models to forecast the equipment failure and schedule the maintenance proactively, reducing the unplanned downtime. Right? प्रिस्क्रिप्टिव से क्या होगा, प्रिस्क्रिप्टिव से यू कैन यूज द प्रिस्क्रिप्टिव टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्शन शेड्यूल्स कंसीडरिंग फैक्टर्स लाइक डिमांड फोरकास्ट एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो जब आप मेक वाले स्टेज पर हो, मेकिंग वाले स्टेज पर, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करना है, जो आप हिस्टोरिकल डेटा निकालो. प्रिडिक्टिव में क्या करना है कि आपको मॉडल्स लगाने हैं जिससे कि आप इक्विपमेंट फेलियर और ये सारे जो रिस्क एनालिसिस है वो कर लो. और प्रिस्क्रिप्टिव से क्या करोगे, आप ऑप्टिमाइजेशन की टूवर्ड्स बढ़ोगे. ऑप्टिमाइजेशन मींस कि व्हाट शुड बी द प्रोडक्शन शेड्यूल, व्हाट शुड बी द फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंसीडर. जब आप डिमांड फोरकास्ट करें तो किस किस फैक्टर को कंसीडर करोगे, रिसोर्स अवेलेबिलिटी को आप कैसे प्रिस्क्राइब कर सकते हो, है ना, प्रिडिक्ट कर सकते हो. तो इसका बेनिफिट तो ये होगा कि आपका जो है प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, डाउन टाइम रिड्यूस हो जाएगा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. हाउएवर द चैलेंजेस आर that you need to integrate the existing manufacturing system, जो अभी existing manufacturing system है, with the data. ठीक है, तो आपको डेटा एक्यूरेसी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आपको टेक्नोलॉजीज वैसे लाने पड़ेंगे, है ना. तो दीज विल बी द चैलेंजेस. सिमिलरली मूविंग टू द डिलीवर. ठीक है, डिलीवर मीन जब आप डिलीवर कर रहे हो तो आपको तब आप डिस्क्रिप्टिव कहाँ लगाते हो, आप ट्रांसपोर्टेशन एनालिसिस में डिस्क्रिप्टिव लगाते हो. इसका मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन आप यूज कर रहे हो उसकी ट्रैकिंग के लिए, टू ट्रैक द डिलीवरी परफॉर्मेंस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड रूट एफिशिएंसी. ठीक है, इसकी हिस्टोरिकल डेटा निकालते हो. उसके बाद उस हिस्टोरिकल डेटा से आप क्या करते हो, प्रिडिक्टिव मॉडल लगा के एस्टिमेट करते हो कि हिस्टोरिकल डेटा से आप एस्टिमेट करते हो कि नेक्स्ट डिलीवरी टाइम क्या हो सकता है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स सच एज ट्रैफिक कंडीशन, वेदर, हिस्टोरिकल एंड ऑल सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके आप मॉडल्स लगाते हो. ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव से क्या करते हो, आप रूट ऑप्टिमाइजेशन करते हो, मतलब बाय यूजिंग और बाय अप्लाइंग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक टू डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट डिलीवरी रूट. ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स अगर आप डिलीवरी में लगाते हो, डिलीवरी स्टेज पर, तो क्या करते हो, आप डिलीवरी रूट को ऑप्टिमाइज करते हो. राइट, व्हीकल कैपेसिटी वगैरह जो है आप चेक करके. तो इसका बेनिफिट तो ये है कि आपको आपकी डिलीवरी रिलायबल हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू ट्रैक. ओके, चैलेंजेस ये है कि रियल टाइम डेटा अवेलेबिलिटी, इट रिक्वायर्स द लॉजिस्टिक, इट रिक्वायर्स द रिसोर्स पर्सन एंड रिक्वायर्स द टेक्निक्स, है ना, बोथ. Return may we have discussed, if you remember, return was the last chapter, second last chapter, last was the sustainability. So here return में आप descriptive कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि just identify, सारा अगर historical data आप collect कर लो तो आप identify कर पाओगे, pattern बना पाओगे कि क्या क्या reasons रह रहा है return होने का, कौन से ऐसे probable product है जो return हो रहे, किस geographical area में बार बार return होते हैं, है ना. जब इसमें प्रिस्क्रिप्टिव लगाओगे तो आपको पता चल जाए कि रिटर्न आप मतलब फोरकास्ट कर सकते हो कि रिटर्न का वॉल्यूम क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ सम हिस्टोरिकल डेटा दैट यू हैव कलेक्टेड. प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या रहता है, सीजनल ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो. और प्रिस्क्रिप्टिव
जब आप लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल जब लगाओगे तो आपको आपके अपने रिवर्स लॉजिस्टिक को ऑप्टिमाइज कर पाओगे, अपने एसोसिएटेड कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाओगे क्योंकि आपको प्री हैंडेड समझ में आ जाएगा, राइट? तो बेनिफिट तो यही है कि आप बेटर हैंडल कर पाओगे रिटर्न्स को, आपका कॉस्ट रिड्यूस होगा, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ऑल दिस चैलेंजेस वही अगेन है कि रिवर्स लॉजिस्टिक में भी, सॉरी, रिवर्स लॉजिस्टिक में भी चैलेंज वही है कि जो है इट इज हैंडलिंग डाइवर्स रिटर्न रीजंस एंड मेंटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी ड्यूरिंग रिटर्न्स, ठीक है? चैलेंज यही है कि आपको जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, आप जब भी डेटा लगाते हो तो इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स, तो मेंटेनिंग द रिवर्स लॉजिस्टिक इज लाइक वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और एक अलग मतलब एक प्रॉपर बिजनेस का ये हो जाता है ना, इट रिक्वायर्स द रिसोर्स एंड टेक्निक्स एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो दिस इज इट, ओके। सो अगेन डिस्कसिंग ऑन द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, हमने हालांकि हर एक के साथ मेक, डिलीवर, प्लान, रिटर्न सबके साथ हमने बेनिफिट और चैलेंज डिस्कस कर दिया। हाउएवर, रिपीटिंग अगेन, अगर आपको कॉमन पॉइंट्स चाहिए तो पहला तो डेटा एनालिटिक्स यूज करने का बेनिफिट है कि आपका कॉस्ट रिडक्शन होता है, जैसे ही आप डेटा एनालिटिक्स यूज करोगे आपका इन्वेंट्री लेवल बेटर हो जाता है, एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो जाता है, स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक हो जाता है ना, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इनहैंस डिसीजन मेकिंग, ठीक है? ये तो कॉमन आपको है, अगर किसी में कुछ याद नहीं भी है तो आप ये कॉमन लिख सकते हो, कॉस्ट रिडक्शन, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड इंप्रूव इनहांस द डिसीजन मेकिंग। चैलेंजेस वही है, डेटा इंटीग्रेशन का चैलेंज है भाई, अलग अलग सोर्सेस से डेटा लाके इंटीग्रेट करना इज अ कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग थिंग। मॉडल एक्यूरेसी भाई, आपको बिल्कुल प्रिडिक्टिव के लिए जब तक कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं हो तब तक आप प्रॉपर प्रिडिक्ट फोरकास्ट नहीं कर सकते, है ना? और उसके बाद चेंज मैनेजमेंट मतलब आपको कल्चरल चेंज लाना पड़ेगा जहां एम्प्लॉय रेडी टू शिफ्ट हो टुवर्ड्स डेटा ड्रिवन, राइट? वो अपने नॉर्मल इसको, है ना, हटाकर वो डेटा के टुवर्ड्स कंफर्टेबल हो, राइट? Thus, and after writing this, you have to write a concluding paragraph. आपको conclusion में लिखना है कि by incorporating the descriptive, predictive and prescriptive analytics into the supply chain, the multinational retail corporation it can address its challenges effectively, leading to improved operational efficiency, reduced cost, and enhanced the customer satisfaction. Okay, so बाय दिस यू हैव टू एंड। तो एक क्वेश्चन लिखने का, एक 20 नंबर का क्वेश्चन लिखने का ये तरीका होता है, फर्स्ट यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन, देन यू हैव टू डील विद ईच ऑफ द सब पार्ट आस्क्ड इन द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। अगर उसमें बेनिफिट चैलेंज लिखा है तो अटैच करना आपको बेनिफिट चैलेंज, पॉइंट हैज टू बी रिटन इन बुलेट एंड द एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन हैज टू बी गिवन देयर, ओके? चारों पॉइंट को डील करना है, मेक से प्लान से लेके रिटर्न तक, ओके? चारों प्लान में तीनों पॉइंट, तीनों एनालिटिक्स आपको दिखानी है विद द एक्सप्लेनेशन एंड देन द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। ये वाला पार्ट आप रिमूव कर सकते हो, बट देन you have to write a proper conclusion. So this is the way you deal with a question which comes for 20 marks. Okay, so this way you may expect the case studies, okay, in your exam. And I'll also be coming with one more practice case study which will be based on a similar pattern only. So thank you so much. If you have any query, any questions, you can write in the comment box. I'll be dealing with that. Okay. So thank you so much. Bye bye.